This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। हम बात करेंगे आज गैस लोड मैनेजमेंट के हवाले से, एनर्जी के इश्यूज़ पाकिस्तान में उस हवाले से, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सुई सदर्न गैस कंपनी के हवाले से क्या फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ हैं SSGC की, और इन द डेज़ टू कम अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन टू द कंज्यूमर्स, चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो या फिर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो, इस हवाले से बात करेंगे। फिर CNG स्टेशंस के हवाले से अगर हम देखें तो जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। साथ ही साथ ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे कि ऑयल प्राइसेस में जो पिछले कोई एक साल में हमने इतनी ज़्यादा कमी देखी, ये जून 2015 में $115 फ़ी बैरल थी, ये कम होकर अगर $27 फ़ी बैरल तक पहुंच गई थी, और अब थोड़ा सा हम इसमें रिबाउंड देख रहे हैं, अराउंड $35 फ़ी बैरल तक पहुंची है। तो इतनी ज़्यादा कमी के बाद गैस की यूटिलाइजेशन में कितनी ज़्यादा कमी आई है, ये तमाम इशूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खालिद रहमान साहब ने, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के। खालिद, प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। शुक्रिया। Khalid, we'll start with the challenges which SSGC is facing. क्या चैलेंज जो इस वक्त SSGC के सामने है और इसको टैकल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं? जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो आपका तो बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोफाइल है, बाहर मुल्कों में आप काम करते रहे हैं, UK में, हांगकॉन्ग में कोई 18 साल के करीब काम किया, फिर यहाँ पे PPL में काम किया आपने, बड़ा एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है आपका। ये जो चैलेंजेस हैं इनको कैसे आप टैकल करेंगे खालिद? जी शुक्रिया बहुत बहुत। आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव इनवाइटेड टू मी टुडे। ये जो एक एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टच अपॉन लिटिल बिट अबाउट द एनर्जी सिनेरियो इन द कंट्री, और उसकी कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं आपको चैलेंजेस भी है ना अर्ज़ करूँगा। जो कंपनी की जो मुल्क के एनर्जी ज़खायर हैं उसमें से गैस का जो हिस्सा है वो कोई 50% के करीब है, एंड दैट इज़ दी वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट द कंट्री इज़ डिपेंडेंट अपॉन। एंड जो कंपनी की ज़िम्मेदारी होती पड़ती है कि हम ये जो ज़खायर हैं गैस के, ये हम इन अ मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर अपने कंज्यूमर्स को पहुँचाएँ, और उनकी सर्विस डिलीवरी हमारी जो हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंज्यूमर्स के, वो हम मीट कर सकें। तो उसके तहत दे आर 4 or 5 चैलेंजेस विच आई वांट टू ब्रिंग अप ऑन यू। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देयर इज़ डिमांड सप्लाई गैप, उसको हमें कैसे पुर करना है गोइंग फॉरवर्ड, ताकि हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके तक हम पहुंच सकें, और सिर्फ जो कि रजिस्टर्ड कस्टमर हैं उनके तहत नहीं, उनके हद तक नहीं, बट मच बियॉन्ड दैट, बिकॉज द कवरेज इज़ अराउंड 30-35%. देयर इज़ अ मच बिगर रिक्वायरमेंट ऑफ pipeline gas, both in terms of domestic sector, commercial sector, industrial sector, and also in transportation, which is CNG. So we have to make sure that we have to fill in that demand supply gap so that we can reach out to our customers and meet their demands. Right. So that's the first and foremost challenge. The second, बहुत बड़ा challenge है. Undoubtedly, it's not an easy task. It is a very major challenge, and I will come on to what are the steps that the company and the government is moving to be able to achieve that given objective and the challenge. The second is that we are relying upon currently on indigenous source of gas mainly. As you know that there have been an import of LNG which commenced from end of March last year, and there is a very major program for import of gas going forward. However, जो indigenous gas का जो इस्तेमाल है हमने कभी conservation की तरफ गौर नहीं किया. So if you are going and importing gas from outside,
और जो कि हम और जगह से अपने आप को इंगेज कर रहे हैं, उसमें फॉरेन एक्सचेंज भी इन्वॉल्व है, उसमें कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है, उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, डिपेंडेंस भी आ जाती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ गैस. दैट्स राइट. और जैसे आपने कहा इंपोर्ट के हवाले से, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो कतर के हवाले से हम बात करें, अगर एलएनजी इंपोर्ट करते हैं और 16 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ओवर द पीरियड ऑफ अगर 10 ईयर्स बात करते हैं, अगर 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर एनएम भी है तब भी इट्स ह्यूज कॉस्ट. लेकिन ऑफ कोर्स उसको फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह देखा जाएगा. इंडिजिनस जो रिसोर्सेज हैं उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है? उसमें ना काम हो रहा है और होता रहेगा. But there is obviously a requirement to do much more, as there is a requirement to do much more in all areas. Of course. तो उसमें but the reality is that there haven't been a major discovery in the last many years. उसकी reason? Because you have gone through the high prospective areas. You have already taken them up. You have produced. Now you have you have to do more exploration. You're going into medium high risk areas, and people, at least for foreign companies, they are a little bit apprehensive in terms of going into medium high risk areas. So the local companies, and especially the government-owned companies such as PPL and OGDCL, or majority owned by the government of Pakistan, those are doing quite a lot, but there are capacity constraints of these companies as well. So going forward, there is a plan. I mean, there is a plan for offshore exploration, but in the current scenario, when the prices have come down fairly substantially, it all boils down to economics. That's right. So economics probably does not support the sort of activity that you require, but the government is trying to incentivize exploration and doing whatever is possible in order to speed up the exploration in the country. Right. So the government has taken measures in terms of license management, making people operate under the time frame within which they have been given the license, and so various measures are being taken by the government, but that's not my area. My area is now in terms of transmission and distribution of gas. So the two challenges I've come out very clearly, that demand supply gap and conservation. The third is if we are bringing expensive energy into our system, we have to take very drastic actions on the unaccounted for gas. That's right. And line losses पे भी लाजमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसलिए कि लाइन लॉसेस के हवाले से या फिर जो गैस पाइपलाइंस वगैरह हैं उनकी रीवैम्पिंग, रिहेबिलिटेशन, फिर नई लाइनें वगैरह दोबारा से इंजेक्ट कर. बिल्कुल. आई थिंक देखिए इसकी वजूहात बेतहाशा हैं. जो अनअकाउंटेड फॉर गैस और जो आपने लाइन लॉस कहा, इट्स द सेम थिंग. और उसकी वजूहात एक तो आपकी है कि यू हैव ओल्ड ऑब्सोलीट corroded pipeline in your distribution network. You have issues relating to measurement, metering. You have issues relating to maintenance of the pipelines in terms of corrosion inhibition. You have issues relating to theft, which is becoming more predominant now, unfortunately. So there are various measures and there are various reasons, and there is various programs which we are conducting simultaneously in order to make sure it's a problem which has accumulated over a number of years. You have to appreciate that we have a transmission network of 45,000 kilometers. So to address that issue requires not only substantial financial resources, but substantial and competent human resources and good governance that exist everywhere, all across. So we need to address. How to bring about good governance? Well, very significant issue it is. Well, public sector organizations have degenerated over a period of time, and I think those need to be addressed. And I think you need to have good professionals, good administrators dealing with things and addressing things which are right. So if you believe in that philosophy and strategy, and you believe in doing things which are correct and right, you always succeed, irrespective of what the
external influences are. And I'm pleased to state that I have been very successful. But however, the change management is the most difficult process of, and you're dealing with people. So people issues have to be addressed internally, and those are being looked at. And however, there is a very clear direction. It is management by actions, management by giving setting examples. So anything that we ask anybody else to do, we practice it ourselves before we preach to others. So I think that is a message which is going very well outside and inside the company. When it comes to outside, if you have constraints and you explain that they are you have a mandate and you can only operate within the mandate, and I think people understand. अब इसी पे सवाल जी कि जैसे आपने कहा कि यू हैव गॉट द मैंडेट और आपने फिर मैंडेट में रह के ही सारे काम करना है। अगर इसी को लेकर आगे चलें, हम अक्सर बात करते हैं थेफ्ट के हवाले से। एक तो हमने लाइन लॉसेस की बात की, जब हम बिजली की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी अगर हम पाकिस्तान में देखें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई 20% के करीब तो लाइन लॉसेस जो ओवरऑल हमारे पास है फेस करें। लेकिन SSGC जो सिंध और बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे दो चीज़ों के हवाले से, एक तो जब थेफ्ट होता है आपकी टीम जाती है वहाँ पे रेड करते हैं तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, नंबर वन थिंग। सेकेंडली, लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, हाउ टू टैकल इट? ओके, देखिए एक तो ये है कि हम जो ये लॉसेस का मसला है, ये एक इट्स अ वेरी मेजर इशू एंड इट इज़ सो वाइड स्प्रेड that I feel that it is beyond the reach of the company. So as a consequence, we understanding that it is beyond the reach of the company, we are taking assistance of all the stakeholders. So the government of Sindh has been very kind to give us a police station which is dedicated to SSGC, and we are constantly carrying out raids. In addition to that, both in Sindh and Balochistan, we have a lot of support from all law enforcement agencies, the civil administration. Before we used to get a lot of pressures in terms of influences from local notables, and I think that is somewhat being addressed simultaneously. In addition to that, what we will be doing and what we started to do is to work with the local representatives and try to address the issues and problems with them, so they can reach out and assist us. We want really not to inconvenience anybody. We want to provide gas, which is our job, and it is not there that we go through distribution to disconnection raids and inconvenience consumers, but it is a desire that instead of getting unregistered gas, you get registered gas. People are already paying to somebody else. That's right. So there is a very major undercover element which is operating, and it is so well spread and widely spread that it is unbelievable. Now, to respond to your question as to what resistance we face, we do face a lot of resistance, because once you take inconvenience anybody who is using a source, they will protest. And there are protests which happens, they protest which happens while we are carrying out the disconnections. There is protest which is carried out in front of our offices. However, एक तो चोरी करते हैं, दूसरा फिर अगर चोरी रोकने के लिए रेड्स किए जाएं तो फिर एहतजाज भी करते हैं ऑफिसेस के सामने भी। इसका क्या रेशनल? सब देखिए इसमें मैं आपको एक आई एम अ वेरी straightforward person, so I would like to give a very straightforward response. जो कंज्यूमर्स बेचारे ये ऑलरेडी किसी और को कुछ ना कुछ जरिए कुछ they are already paying something to somebody else. Now they have not been able to get meters or connections from us for one reason or the other, whether it is moratorium or whether it is some other reason, whether it is not a gasified area where the moratorium falls, whatever. So
some of them are very innocent. I mean, I would say especially on the domestic side, people are innocent. So we need to guide them, we need to help them, and those are the people who really, but then there is a bad element to it as well, which we are addressing, which we are tackling. FIRs are being registered against the culprits. We are taking everybody to a task without any exceptions, and there is zero exception in terms, because if you apply uniformly, anything that you apply uniformly and fairly, it works. And it is working. And so you being the managing director of SSGC, अभी दो provinces आपके पास, सिंध and बलूचिस्तान, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, तो खालिद, I know you for quite some years, you command respect. अच्छे प्रोफेशनल हैं, बाहर आप इतना काम कर चुके हैं, यहाँ PPL को लीड कर चुके हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर चुके हैं, इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं, ये जो चैलेंजेस है, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू टैकल देम, और वाकई इन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे एंड चैलेंजेस विल बी ओवरकम? देखिए, मुझे कंपनी में इसलिए लाया गया है, तो एक साल तो हो गया आपको? मुझे 1 साल हो गया है, और मुझे उठा के नहीं लाए, बट है ना, they went through a process of engagement in terms of they put in the whole due process was followed in my engagement, and they selected me for a specific purpose. And the purpose is very clear, is that you have to deliver under the challenges that are faced by the country and the company both. And so all our directions are in that respect, in terms of bringing internal governance into some sort of structure and form, building up a management process in the company, making sure that you are able to deliver your customers better. The unaccounted for gas is fully addressed. The major programs which are happening in the company in terms of the transmission, I haven't talked about the major energies are going towards making heavy investment into pipeline right now. We have a daunting task of putting in 350 kilometers, 42 inches, which is unprecedented in the history of the company, and with an investment of nearly 60 billion rupees in a year's time, to carry out the entire process and then to execute it, and to be making sure that things are done right, and you are not really exposed to any risk at a later date. There's a lot of work that goes on. So these are all very important and major steps, and I'm sure that the government had confidence in my ability, and the board does. I do have full confidence of my board, and I get a lot of support from them as well, in terms of making sure that whatever is the program which has been set is, I'm there to deliver. And believe me or not, once I feel that I'm not able to deliver, I will not stay in a place where I feel that I'm redundant. So that has been my track record, and that's what I want to continue with that. So there are challenges, as you know, that the company has faced other challenges in the recent past as well, and those are major factors which are affecting the company, but inshallah we will deal with these issues in the interest of the country and the company both, and so that we do things which are better for the future. We want to make this company a good, sustainable, professional entity meeting the requirements of our consumers. That is the bottom line. अच्छा, LNG की इंपोर्ट के हवाले से अक्सर बातें करते हैं. हमारे नेबरिंग इंडिया ने LNG इंपोर्ट करना शुरू कर दी 2001 में. आज हम 2016 में बैठे हैं. इंपोर्ट होना शुरू हुई, कोई अराउंड 1 साल हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि LNG की इंपोर्ट के बाद हमारे जो ये हमेशा बाय लार्ज आप देखें तो विंटर्स में जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, लोग तो ये कहते हैं कि जी नाश्ता बनाने के लिए भी गैस अवेलेबल नहीं होती. मैं यहाँ अगर सिर्फ सिंध बलूचिस्तान की बात करूँ, तो LNG की इंपोर्ट के बाद ये मसाइल आप समझते हैं कि हल होने जा रहे हैं? सर देखिए, इन आवर फ्रेंचाइज एरिया बोथ इन सिंध एंड बलूचिस्तान, we have not really come to a point where we have deprived our consumers in any manner.
we have always come and especially within the priority area which has been defined by the government, the domestic sector comes on the top, then you get power generation, then you get industry, then you get captive power, then you get CNG. So, within that there is basically we are not doing any load shedding. There are issues relating to our distribution system. और इसी वाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करें खालिद रहमान साहब से, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुई सदन गैस कंपनी के। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सुई सदन गैस कंपनी के हवाले से। सूबा सिंध में और बलूचिस्तान में SHGC की जो ऑपरेशन है, जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको टैकल करने के लिए क्या फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ हैं, और अगर हम इस वक्त की सूरत को देखें तो गैस की लोड शेडिंग को टैकल करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो क्या काफ़ी हैं। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो हमने बातें कर ली कि थेफ्ट के मसाइल हैं, उनको कैसे हल करने जा रहे हैं आप। अगर हम पाइपलाइंस की बात करें, जो बोसीदा पाइपलाइंस हैं, उनके हवाले से भी, लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ है वो तो ये कि अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो SHGC के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कोई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई 2.5 साढ़े 3 साल से तो रिपोर्ट ही नहीं हुए। जी खलील, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बड़ी तकलीफ़ कुन एक बात है मेरे लिए, ख़ास तौर पे एक मैं बाई चार्ट अकाउंटेंट हूँ बाई प्रोफेशन, और एक कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतने अरसे तक नहीं आए जो कि रिक्वायरमेंट है कि आप हर क्वार्टरली रिजल्ट्स आप अपने पब्लिक कोटेड कंपनी है, तो वी नीड टू कम आउट टू आवर शेयर होल्डर्स एवरी क्वार्टर। और उसकी सिंपल रीज़न ये थी कि ओगरा का कोरम नहीं था, और उसकी वजह से बिकॉज हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द रेवेन्यू determination of the revenue requirements by OGRA, and since the OGRA quorum was not there, therefore they finally determined the revenue requirements for the year 12-13, 13-14 and 14-15, 3 years during the months of November and December last year. However, there were certain matters where the company was in litigation with OGRA, and there was lack of clarity. So the matter has been clarified through the court, and once that is satisfied, which is expecting during this month, we will be coming forward with our results for 2 years, 12-13, 13-14 in the month of March ultimately, and then 14-15 to follow, maybe in the latter part of March or early April. This is not a satisfactory state of affairs. Then we want to really also work simultaneously with publishing results for 6 months up to 31st of December 2015. So there are multiple issues that we had in finalization of our financial statements. They are all now hopefully under control, except for one matter which is being which is subject to court decision. The hearing is on the 16th, where after that we are ready to move. अंडरस्टैंड। अच्छा, लिक्विडिटी के हवाले से ये फरमाइएगा कि हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में सर्कुलर डेट के हवाले से कि जी ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस अपनी परफॉर्मेंस एज सच सही तरीके से पेश नहीं कर पाती। जब मौजूदा हुकूमत आई तो 2013 में आपके इल्म में होगा कि 480 अरब रुपये के कर्जे उतार दिए गए, फिर दोबारा अमाउंट हो गए। अगर SHGC की लिक्विडिटी की बात करें, जो पोजीशन है आपकी, ज़ाहिर पैसा होगा तो काम करेंगे, पैसा नहीं होगा तो काम कैसे कर पाएंगे। रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें तो क्या हालात है? सब एक जो कंपनी में रिसीवेबल्स एक बड़ा मसला है। वी हैव वेरी हाई रिकवरी और ड्यूज रिकवरेबल फ्रॉम बोथ K Electric and Pakistan Steel Mill. Those are the two areas that we are having immense problems in terms of recovery.
In K Electric, let me clarify that they are currently settling all the dues, the current dues on time, and they are also making payments, some payments for the past dues. But as far as the late payment surcharge is concerned, that matter is sub judice under litigation, but we are hopeful that that matter is also resolved to the satisfaction and interest of SHGC. PSM, Pakistan Steel Mill, that's a major area of concern. Currently, we have about 40 billion outstanding for Pakistan Steel. 40 billion rupees outstanding amount. Absolutely. So as a consequence, we discontinued supply of major chunk of their gas. We are only supplying the minimum quantity to be for their critical equipment to keep running. But the government is fully aware of these two amounts which are due from these two large customers. Also, we have certain issues in terms of recovery from other customers, mainly small customers, domestic customers, and we are making a special effort to recover those amounts as well. Anything which is old has to be recovered on fast track, otherwise the customers would be subject to disconnection of gas. So we have an issue, a liquidity issue. Apart from that, we also have issues relating to the price. The consumer prices have not increased to the extent that is required for meeting our revenue requirements. लास्ट टाइम जब प्राइसेस बढ़ाई थी तो तकरीबन कितना अर्सा हो चुका है उसको? सब इसमें actually the prices were increased only about 3 months back. However, they did not address the backlog that exists in terms of the shortfall in early requirements, and a lot of our industrial consumers have gone to the court and got a stay against that increase. I think the grounds are not that strong, and we are hopeful that that will be the stay will be removed. However, there is a shortfall which is arising out of that as well. And prior to the 3 months before that I mentioned to you, there was no increase for 2.5 years. 2.5 years? Yeah, absolutely. देखिए अभी तो ये है कि गैस की कीमतें कम हो गई हैं. नहीं, लेकिन ये जो 2.5 साल तक अगर कोई इंक्रीज नहीं हुई तो इस हवाले से कोई डिस्कशन वगैरह तो हुई होगी कि देखें इतना अरसा गुजर चुका है. ज़ाहिर है प्राइसेस की अगर हम बात करें तो तकरीबन हर चीज़ की कीमत ऊपर की तरफ जा रही है. अगर गैस की कीमत में इजाफा नहीं हुआ 2.5 साल में तो इसकी क्या कोई सियासी वजह हो सकती है, या फिर ये कि जो रीजनल मार्केट्स हैं, रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनमें प्राइसेस चूँकि कम है तो उसको देखते हुए यहाँ पे कीमतें नहीं. इसमें ना 2-3 वजूहत थी. एक तो द गवर्नमेंट का आपको पता है कि दे डोंट वांट टू बर्डन द कंज्यूमर्स एंड दे want the organizations to become more effective and efficient, so that you don't pass your inefficiency to the consumers. एक major basic एक view है government का, and I think we can't debate on that view because it's a right view. The second view is that आपको पता है कि हमारी OGRA की revenue requirements में काफ़ी time लगा in terms of determination, तो उसकी भी एक वजूहात है इसमें. Magar I think that is secondary, because there is a law which requires that if your cost of gas, अगर आपकी cost of gas की कीमत ज़्यादा है और आपकी revenues कम है, तो government has to act on it within 40 days of that situation when it arises. तो अभी तो prices, आपको पता है कि prices आपने खुद जिक्र किया कि in your preamble कि $115 and you know the gas prices all linked to the crude oil prices. So as a consequence the prices are very high. Now they've come down. So now we are saying that we have excess revenues, but there is a big shortfall from the previous years. एक वजह ये है. दूसरी वजह ये है कि there is always there is a price equalization between SHGCL and SHGC, and basically since we pay a much higher
our tariff relating to our producers is higher as against their tariff on an average. So there are certain adjustments which are made. So there are recoveries which have emerged from that also, and then sales tax ke issues hain. Baaki, I mean, so there are multiple issues when it comes to receivables, to answer your question. But we are handling all of them, and apart from ones which are beyond our control, such as Pakistan steel mills. That is a matter that we are resting our case with the government. We will be approaching the Privatization Commission so that our interest is fully protected. Plus, there is a thing that other measures also be taken to protect the interests of the company fully on these matters. अंडरस्टैंड. अच्छा, अगर हम कंजम्पशन की बात करें, खपत की बात करें, जब हम हाई स्पीड डीजल की बात करते हैं तो जब खरीफ और रबी का सीज़न आता है, यही कोई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर अप्रैल, मई, जून की अगर हम बात करें तो उस वक्त हम देखते हैं कि हाई स्पीड डीजल की कंजम्पशन बढ़ जाती है. अगर वैसे कोई एक महीने में कोई 6 लाख टन के करीब है तो ये कोई 9 लाख टन तक पहुंच जाती है. फिर इसी तरह अगर हम पेट्रोल की कंजम्पशन की बात करें तो बाय एंड लार्ज जो पर मंथ कंजम्पशन है कोई 3.5 से 4 लाख टन के करीब है पर मंथ. प्राइसेस अगर नीचे आई हैं पूरी दुनिया में क्रूड की $115 फी बैरल से कम होकर अगर ये इस वक्त अगर हम देखें $30-35 फी बैरल तक अगर आ गई हैं, इतनी ज़्यादा कमी आई है, तो ज़ाहिर है जो कंजम्पशन है पेट्रोल की और डीजल की उसमें तो इजाफा हुआ होगा. तो इसका कोई रिलेशनशिप है कि गैस की कंजम्पशन में कोई कमी हुई है पिछले कोई 1 साल में या 18 महीने की, अगर मैं 18 महीने की फिगर्स ले लूँ तो पिछले 18 महीने में आप समझते हैं कि वाकई कोई कंजम्पशन में कमी आई है या वैसे का वैसे ही रहा है, वैसे कोई डिफरेंट नहीं है सच कंजम्पशन? नहीं, सब इतना है ना, गैस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता. देखिए, दोज आर कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई रिक्वायरमेंट्स and cyclic. For example, the consumption of gas during the winter increases fairly substantially. So it is weather driven rather than it is not a luxury. It is because the industries are running 365 days in a year, or the requirements of the consumers, the cooking goes in the households every day, constantly. आपकी जो मेजर डिमांड इंक्रीज होती है ड्यूरिंग विंटर इन टर्म्स ऑफ कीपिंग योर सेल्फ वार्म एंड फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स, एंड दैट गोज सब्सटेंशियली अप. एंड दिस ईयर, फॉर एग्जांपल, इन बलूचिस्तान एंड क्वेटा द कंजम्पशन वेंट अप fairly substantially, more than what we had expected, and our pipeline or the infrastructure capacity is able to take gas up towards Quetta and other areas in Balochistan. So they increased from about 150 million cubic feet to about 190 million cubic feet. So these are the cyclic changes which take place. We, as I said, that we are committed to provide gas to our consumers. SSGCL is not subject to any major load management. We do carry out load management in circumstances or in cases where there are very, very high UFG numbers, which we do not apply at all in the case of Balochistan, because Balochistan has to be looked at differently. The losses in Balochistan is far greater than what we have others because of various multiple reasons, and actually we don't have time to discuss that, but there are various reasons that we have. In Sindh, there are various reasons for increases in increase, and there's a major trend which was evolving and which needs to be arrested, that gas is being used for generate electricity, and that also through illegal means. And then they are parallel distribution, electricity distribution system which are operating. अभी ये जो आपने कहा ना कि गैस का इस्तेमाल करके बिजली जनरेट की जा रही है, अगर हम जनरेटर्स की बात करें तो पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक साल में तकरीबन $1.5 अरब के जनरेटर्स आते हैं. 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के जनरेटर्स इंपोर्ट किए जाते हैं. अब ज़्यादा जो जनरेटर्स हैं, अगर जनरेटर्स गैस पे चल रहे हैं और ऑयल की प्राइसेस इतनी नीचे आई हैं,
तो कोई फ़र्क तो पड़ा होगा ना, ज़ाहिर लोग स्विच हुए होंगे, या इससे किसी किस्म का कोई डिफरेंस? सब देखिए, अगर वो पे कर रहे होते गैस के लिए तो उनको कोई है ना फ़र्क पड़ता, बट इफ दे गेटिंग most of it is unfortunately bad practices, So what is happening is that they have installed compressors, they are sucking gas from the system, they are generating electricity, and during the load shedding which is taken in terms of electricity, they are being providing or they are providing electricity through stolen gas. So this trend have increased a lot, and we need to arrest this. Company is a limited, has limited resources. It doesn't really cater for the entire regeneration in society that takes place. It doesn't have that, I mean, no doubt that our people may be engaged in this, and that is also being addressed simultaneously, but they are bigger, much bigger canvas that we need to operate against. It's not within the reach of company to address all these issues. So answering your question, cyclic effect comes from these factors: load shedding of electricity, the gas consumption goes up, and the unaccounted for gas also goes up, because these are not brought to the electricity through a measurement system. Winter, the load increased fairly substantially. So this year there were certain issues with the pressures in Balochistan. We did recognize, so we are taking action. Sin में नहीं थे such. Sin में थे, but सब देखिए, it's a large network, so you cannot have 100% flow, and so these are within the acceptance ranges. But let me assure you, we have a very effective complaint monitoring system. Anything that comes to me is addressed within 24 hours, for sure. People do complain. There are issues, as I said, in the transmission distribution system. Sometimes it does happen that some of the fields go on for unscheduled maintenance, they go on. So if there is a reduction in the gas supply, then obviously we have to curtail it somewhere, and the pressures have to come down. अच्छा, वेरी क्विकली अगर हम ये बात करें कि सूबा सिंध में और बलूचिस्तान की हम बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं एजुकेशन के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, गुर्बत है। इस हवाले से जो आपकी CSR एक्टिविटीज़ हैं वो कितना इफ़ेक्टिवली आप समझते हैं कि लोगों को हेल्प आउट कर रही है? आई थिंक हम देखिए, CSR हम काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड मेनली हमारा फोकस जो है वो एजुकेशन के ऊपर रहा है। हमने हेल्थ के ऊपर गए हैं, हम और क्लीन वाटर के ऊपर भी गए हैं, क्या कहते हैं, बायोमास इलेक्ट्रिक जनरेटर, उस पर भी जाने का इरादा है। So we have an effective CSR policy, and we want to distribute it, and we want to reach out to areas which are not already serviced right now. That's great. And where do you see SSGC 10 years down the road? आपको एक साल हुआ है, एक साल में जो आपने काम किया है, based on that, एक तो आपका vision for the future of this company. Sir, I can only create a base because I am here for 3 years, so I can create a foundation, a base. As I said that when I took over, there were immense challenges in the company, and for various reasons. Everybody must have tried, but really one of the major challenges was governance, So that is being addressed on very strong footing, and we are ensured that we lay a foundation which is not disturbed or distracted for many years to come. That's number one. Point number two is that we need to ensure that we need to bring out our unaccounted for gas to reasonable levels which are acceptable norms. Obviously, to expect that to create miracles, they are not possible, because 1 year I've made a substantial effort, and things are moving in the right direction, and we hope to get results. Thirdly, as we need to be a model utility company. People talk good about us, like people talk about other utilities which have evolved over a period of time from bad to good.
and we want to be talked about SHGCL, which actually has a good name already in the market, but we want to improvise on that. We want to make sure that our customer service is fully met, ethical practice are fully followed, optimal utilization of whatever we do, and good practices in the company which will bring in the change. The more important thing is that we need to reach out to our customers, and we need to service and deliver them, and make sure that we reach out to the entire franchise area for which we are responsible for, because our target is not 2.7 million customers that we have right now. Our target should be 10 million customers, and we should be able to service those customers very effectively. So that's what my vision is, and inshallah we have a good team. We are well-meaning people. If every one of us work hard, I'm sure that we'll be able to deliver going forward. I understand. दो चार अगर हम मसाइल की बात करें तो उनमें एक मसला लाजमी सामने आता है, ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात की तरफ से कि जी हमें गैस नहीं मिलती, हम चाहते हैं कि हम संडे को भी काम करें लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी है आपकी? जी बिल्कुल, आई थिंक हम चाहते हैं कि ना उनको 24 आवर्स 7 days a week गैस मिले, and we have now open avenues for LNG. There are customers who are reaching out to us, including देखिए CNG हमें ना उनकी तीन दिन हफ्ते में लोड शेडिंग होती है. So we are reaching out to all that now, since there will be availability of energy, please come to us and talk to us, and which they are pursuing us. For example, the Appnama is Tariq Saud Saab has been constantly been in touch with me. Gayas Peracha from CNG. के हवाले से बात करूँ कि तारिक सऊद मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अक्सर मुलाकात होती है. कोई 1-2 साल पहले हम दोनों इस्लामाबाद सरीना होटल में थे, तो वहाँ 2-4 मसाइल में से जो उसने एक बात की तारिक ने कहा कि यार अगर गैस की अवेलेबिलिटी हो जाए तो यकीन करें कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है ना, ये हम जो 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हमने एक वक्त में की थी, लास्ट फिस्कल में 13.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थी, हम इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं. तो इस हवाले से आप समझते हैं कि इट्स गोइंग टू बी? I think he's absolutely right. He has been pushing me and pursuing me, you know. If at all, I do admit the delay has been from our side. It's not because delay has been from our side, it's a problem if we have to look at the various frameworks. We have to make sure that whatever we do it right, so that we are not subject to any investigation in times to come. So these are the limitations that we have. It is not that we don't want to deliver, we want to deliver, but we also need to make sure that we do it right in a right manner, and there is a cover of regulation with us so that we can effectively deliver. I understand. Khalid, it was really great having you on the show. Thank you so much for coming over. Thank you. Thank you. You're welcome. Well नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं. अब तक के लिए इतना ही. अपने मेज़बान खलील, अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.